हेलो केमिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा मैंगनीज हेप्टॉक्साइड क्या है, कैसे बनाते हैं और उसका एक्सप्लोसिव रिएक्शन कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले आपका रिएक्शन टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करना होगा किसी अच्छे से कवर से, जिससे कि वो बिगड़े ना। नाउ ओनली टेबल क्लीन करना नेसेसरी नहीं है, हमें चाहिए कुछ ग्लव्स एंड माउस, क्योंकि उसमें यूज़ होने वाला है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जो हमारी स्किन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, बर्न होता है, स्किन के डैमेज हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है और उसको हम नोज़ल के द्वारा सांस लेने से हमें श्वास की तकलीफ़ हो सकती है। फेफड़े में ये KMnO4 जाने से कुछ श्वास की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए मास्क एंड हैंड ग्लोव्स आर very important for this project. Now, someone may ask which type of gloves should I use during practicals in my laboratories or my own practicals. So, nitro gloves are the best gloves for every practical that doesn't melt into again H2SO4. So, gloves, nitro gloves are the best choice for practical. Doesn't react with your H2SO4 or any acids. So, use nitro gloves during the practicals. सबसे पहले मैं यहाँ टेस्ट ट्यूब के ज़रिए इस वॉच ग्लास में सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने जा रहा हूँ। और अगर आपको अपना मैंगनीज हेप्टॉक्साइड का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में बनाना है तो लेस H2SO4 यूज़ कीजिए, जिससे कि KMnO4 ज़्यादा डाल के आप अपना सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हो। Now I'm going to add some potassium permanganate into this watch glass and mix it till it mixes all together in a part. So potassium permanganate, be careful कि आपकी स्किन के साथ ये टच ना करे। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा KMnO4 इसको स्टिर करना है हमें टिल कि सब कुछ मिक्स ना हो जाए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद सॉल्यूशन ग्रीन कलर में हो जाएगा और स्टिर करना है टिल कि सारा KMnO4 मेल्ट, मतलब कि पिघल ना जाए हमारे H2SO4 के सॉल्यूशन में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, स्टिरिंग प्रोसेस, KMnO4 एंड H2SO4 के बीच में एक रिएक्शन होता है जिससे ये सॉल्यूशन हॉट हो जाता है। मतलब कि आप बीच में इसको टच करके देखिए तो ये, मतलब टच करना नहीं है, स्किन बर्न हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कांच के नीचे हाथ रख के कि ये गर्म हो चुका है, इसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है। सो ये अभी गर्म हो चुका है थोड़ा सा, अभी इतना गर्म हो चुका है इसके अंदर से धुएँ निकल रहे हैं, आप देख नहीं सकते पर इसमें से धुएँ निकल रहे हैं एकदम। इसलिए मास्क ऑन रखें हमेशा, अगर ये आपके सांस में चले जाएंगे ये ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैंगनीज का हेप्टॉक्साइड का सॉल्यूशन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये सारा का सारा पोटेशियम परमैंगनेट इसमें स्टिर हो चुका है। अब प्रैक्टिकल की बारी। अभी आप देख सकते हैं क्लियरली अंदर से धुआं निकल रहा है, इतना गर्म हो चुका है ये सॉल्यूशन। अभी के अंदर से फ्यूम्स निकल रहे हैं जो कि हानिकारक है। सो मास्क ऑन होना ही चाहिए ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिकल, सो कि कुछ होए ना हमें ब्रीदिंग की हैवी डिजीज। Now after totally 5 minutes of breaking and stirring the KMnO4 crystal apart, I am here with my product, a potassium permanganate solutions, manganese heptoxide. So now let me tell you what is the manganese heptoxide. So manganese heptoxide is explosives which is commonly used in the explosions.
like if you put this solution onto the someone's t-shirts or shirt, it will explode literally. But don't do that, I'm just saying for fun. You can do this practical as a fun or as an activity or to upgrade your knowledge. Now we are going to add some cotton onto this, but be careful. Everything which is near to the solution, which is carbohydrates, made up of the carbohydrates, please remove that everything that is a container of the carbon. But now I am just calmly putting this cotton onto the solution and see what's happening. Again I'm going to add this cotton onto the surface and see, let's see what is happening after. Oh my god, this is the burning disasters. Okay, now I'm going to put some alcohol, I means isopropyl alcohol, which is 99% pure. I'm going to add drop by drop into this solution. But for the fun, I want to do this thing again. If you missed it, then see it again, what is happening really inside of it. Yeah, did you see, guys? This is a literally happening disaster. Okay, with brown fumes over the sky, and we are inside the city of the cloud. Ooh, haha. So this is the reaction of when the potassium permanganate is con- uh, co- contacting with some thing which is made up of the carbohydrates. It start to explode, which uncontrollable. So now this is the practical number 2. We are going to add some isopropyl alcohol into the solution. Now for the best result, even in our laboratory, I uses this syringe to suck up every solution. It is markable, it is marked on it, so I can use how much and which contain ml of a solution I want to take, and I can use the syringe as the dropper. Now I'm going to use this. Oh my god, uh, it created mass on the syringe, so I have to be careful about it. And don't do this type of mistake to put this carbohydrate thing near to this solution, or it will explode, or it can cause a very big fire in your home. So with all the carefulness, I am going to deep add the normal solution. Okay, oh, explode, boom bury. See, this is what we call a potassium permanganate solution with H2SO4, manganese heptoxide. And now a tremendous amount of explosion. I'm going to 3 2 1. Look, it created something fire on it. I can handle it. Just put. Okay, now again